Hey, so let's look at what I mentioned yesterday in my post market in terms of levels. I wanted the markets to fall, especially Nifty to fall and come around 17,720 levels and 650 levels. But the market was falling, but every chance it got, it went and it tested 10 MA in Nifty 50. So couldn't do much in terms of trades on first half, because if you look at the 1 hour closing, the 1 hour closing was above Friday's low, which for me is not a good structure for short. And if you come back, say around the next candle close, which is around 11:15, was still above that. So I wasn't really hoping the markets to come down. So didn't really trade anything, didn't do anything, because I was positionally I wanted a short trade. I was looking for a short trade, but because of the structure, I was not really interested. So what did I do? Even in Bank Nifty, if you look at Bank Nifty, it gave a lot of good opportunities to short, but because of the structure in Nifty, I didn't really want to. What were those good opportunities? If you go and probably zoom out a 3-minute chart, you will see that there was a lot of consolidation yesterday from where Bank Nifty fell, and that level was tested in Bank Nifty around 11:15, which was 49.70. From there it fell almost 300 points after a close below 10 MA. So but no, I didn't really want to do that. I didn't really want to take that shot because of Nifty. I didn't really like the structure, and once Nifty, even once after it was closing below, it did not really uh, wasn't really interested. So I was waiting for my system trade, and eventually my system trade did come, which was basically so I didn't really have anything in the first half, so didn't really trade in the first half. Second half I got a trade which I shared, which was basically if 130 till 130 Bank Nifty makes a new low, I'll look for a short below 2 o'clock. So if you look at Bank Nifty's 15 minutes chart, it did not make a new low at by 130, but it did give some scalping opportunities below 2, which I took. Stop loss again was too high, and I did not take this trade in futures. I took this trade in options selling. So I sold calls, and my stop loss was 2 o'clock high. But again, I knew because the system did not trigger, the trade did not trigger into my system, so I knew that it probably will be either sideways or it will hit my stop loss. So I came out quickly. Whereas Nifty was actually a better shot, but I did not take Nifty. So this was my trade, only one trade. Did not trade in the first half, did not really like the structure. But if you overall go and check on a spot chart, 1 hour chart, every chance it basically went and retested 10 MA a lot of times, like mostly all candles in 1 hour, and it was making a new low. So yeah, it was a good shorting opportunity, but I didn't really like the structure in smaller time frame, so I did not take this trade. Again, let's see. Whenever what I think is probably whenever this kind of a structure happens, it either gives you a quick move towards downwards side, or goes up. Let's see what happens tomorrow. I'm expecting a gap down, though I don't really see any volumes, but yeah, I was expecting this short today, but let's see. And this is my positional view for tomorrow. When I say positional, as I mentioned before also, I'm not giving you a 10-day, 5-day, 8-day view. My positional view mostly ends to the next day, or next to next day, or if my stop loss is taken out. I've not sold anything, I've not bought anything. But if I get shorting opportunities tomorrow, I will short. If I get a gap down, I wouldn't really short, because mostly we've closed around 800 levels in Nifty spot. So my expected gap down could be around 7 to 5 levels, or 650 levels, 17650 levels. So I'll probably wait and see what happens there. If there is no gap down and it behaves as it did today, then I would be a little careful in shorting the market, because today also the first half structure was really not bearish for me. So yeah, we'll wait and watch. Still bearish in the market. बैंक निफ्टी देखते हैं. बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, कल मैंने पोस्ट मार्केट में ये बोला था कि मैं चाहता हूँ कि 650 लेवल्स आए या 740 लेवल्स आए गैप डाउन पे, या मार्केट ट्रेंड करे मार्केट के टाइमिंग में. दोनों नहीं हुआ. अगर सुबह का स्ट्रक्चर देखें निफ्टी में, तो
पहले 1 घंटे के कैंडल ने या 11:15 तक तो वो फ्राइडे के लो के ऊपर था क्लोजिंग उसका, और फिर सडनली वो गिर गया और डे लो टच किया उसने। स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेरिश तो नहीं था बिल्कुल भी, फर्स्ट हाफ का साइडवेज टू बुलिश स्ट्रक्चर था 11:15 तक तो इसलिए मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने, अगर आप मेरा पोस्ट मार्केट देख रहे हो तो मैं एक्सपेक्टेड टारगेट से मेरे 730 जो अभी तक आया नहीं है, तो मैं चाहता था कि वो आ जाए आज, पर वो हुआ नहीं। मैं पोजिशनली कोई शॉर्ट नहीं हूँ, कोई लॉन्ग नहीं हूँ अभी भी, पर मैं इंट्राडे में करना चाहता था, लेकिन मैंने किया नहीं। फर्स्ट हाफ मैंने कोई भी ट्रेड्स नहीं किए। मैं वेट कर रहा था अपने सिस्टम का, वो सुबह भी मुझे कोई सिस्टम ट्रेड आया नहीं। दोपहर को अराउंड 1 o'clock मैंने शेयर किया सिस्टम ट्रेड, जिसमें मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी 130 तक नया लो बनाती है तो मैं 2 o'clock, ये मेरा रेफरेंस है उसके लिए, 2 o'clock के कैंडल के नीचे सेल करूँगा। स्टॉप लॉस रहेगा 2 o'clock का हाई। अगर आप देखेंगे तो 130 कैंडल ने 130 तक नया लो बना नहीं 10 o'clock के बाद, तो मैं बेसिकली अगर मैं इस ट्रेड में अगर जाता हूँ, मैं यूजुअली ऐसे ही करता हूँ, अगर सिस्टम ट्रिगर नहीं हुआ तो मैं अगर रिस्क लेता हूँ तो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लेता हूँ। तो मेरा स्टॉप लॉस था, अब कोई लोग बोलेंगे 15 मिनट्स में क्या स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी, पर मेरा सिस्टम मोस्टली 15 मिनट्स में ही है, तो इसलिए मुझे 15 मिनट्स का चार्ट देखना पड़ता है। लेकिन एग्जिट मैं 3 मिनट्स के चार्ट में करता हूँ। तो 2 o'clock को अगर आप देखें मोस्टली स्ट्रक्चर ऐसा ही था, वीवैप पे था, और 2 कल जैसे ही उसने लो तोड़ा, कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी दी उसने, तो वो मैंने इसमें ऑप्शन सेलिंग कॉल सेल बेचे इसमें मैंने, और स्कैल्प मारा। बाकी और कोई ट्रेड लिया नहीं मैंने। निफ्टी का मुझे स्ट्रक्चर सुबह अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं शॉर्ट गया नहीं। अब मैं अभी भी मैं यही को मतलब देख रहा हूँ कि या फिर 730 आ जाए या फिर 650 आ जाए लेवल्स, और अगर इन दोनों लेवल्स पे अगर कल गैप डाउन होता है तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, मैं देखूँगा क्या हो रहा है। अगर इन दोनों लेवल्स पे गैप डाउन नहीं होता है और आज की तरह मार्केट अगर साइडवेज खुलता है सुबह सुबह, तो भी मैं देखूँगा क्या करना है। जैसे आज मैंने कुछ नहीं किया फर्स्ट हाफ में, मुझे एक अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए शॉर्ट करने के लिए, तो इसलिए मैंने नहीं किया। और अगर ये गैप अप खुलता है तो भी मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो हर 1 घंटे का कैंडल ने 10 MA को जाके टच किया है, मोस्टली हर 1 घंटे का कैंडल ने, और नया लो बनाया है। तो मैं चाहता हूँ कि फिर ये 20 MA के आसपास आया और फिर मैं कुछ करूँ। थैंक यू।